Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck's constant h, and the speed of light as c. और ये ऐसे होगा. Okay, which of the following is the correct option? Young's modulus y क्या होता है? f by a divided by delta l by l. Basically ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो kg ms minus 2 divided by meter square, which is kg m minus 1 s minus 2. Gravitational constant is g. तो g क्या होता है? दिस इज एक्चुअली है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. कितना हो जाएगा? kg ms माइनस 2. ठीक है, तो kg m क्यूब s माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, तो ये kg m माइनस kg माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर क्या है? g के ऊपर क्या है? गामा. ओके ओके, नाउ h एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा, जूल सेकेंड, 6.6 जूल सेकेंड. तो जूल इज के जी एम एस माइनस 2 न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड. क्या हो गया? के जी एम स्क्वायर एस माइनस 1. इसके ऊपर क्या जाएगा? एच के ऊपर है बीटा, और सी इज मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर है अल्फा. ठीक है, अब आ जाइए, इक्वेट कीजिए. 1 इज इक्वल टू माइनस गामा प्लस बीटा, दैट्स इट. फिर माइनस वन इज इक्वल टू 3 गामा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो -3 इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, और इसको प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 2 बीटा, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -1. बीटा क्या हो गया? -1 हो गया. ओके, जब बीटा -1 है तो 1 इज इक्वल टू माइनस गामा -1, तो गामा हो गया -2. ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? तो -1 इज इक्वल टू 3 गामा, दैट इज -6, 2 बीटा -2 प्लस अल्फा, तो अल्फा जी हो गए 7. तो 7 -1 -2, ए ऑप्शन. In a particular system of units, a physical quantity can be expressed in terms of the electric charge E, electron mass m, Planck's constant h, and Coulomb's constant k, where epsilon naught is the permittivity of the vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of the magnetic field is, and the value of this is, okay. ठीक है, तो आ जाइए, तो E जो है वो हो गया कूलम. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास इज kg, प्लैंक्स कांस्टेंट इज जूल सेकेंड, एंड कूलम कांस्टेंट k इज एक्चुअली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है B. प्लैंक्स कांस्टेंट इज एक्चुअली जूल सेकेंड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज B, तो फोर्स क्या होता है? QVB होता है, तो B क्या हो जाएगा? F बाई QV. तो F इज न्यूटन डिवाइडेड बाय Q इज कूलम, V इज मीटर पर सेकेंड. दिस शुड बी इक्वल टू, बेटर इज कि पूरा अगर लिख लें, क्योंकि 4 इक्वेशंस आएंगे. ओके ओके ओके, लिख लीजिए. तो दिस इज एक्चुअली kg
एम एस माइनस टू डिवाइडेड बाई सी एम एस माइनस वन, एम कट गया, के जी सी माइनस वन और एस माइनस वन, ठीक है। दिस इज बी, ठीक है, दिस बी न्यूटन पर कूलम, ठीक है, दैट्स इट। अब आ जाइए तो ई पे तो कूलम टू द पावर अल्फा, के जी टू द पावर बीटा, एच इज जूल सेकेंड, जूल सेकेंड हो गया, के जी एम एस माइनस टू इंटू एम इंटू एस, इसके ऊपर गामा, एंड के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो के जी एम एस माइनस टू एम स्क्वायर सी माइनस टू, इसके ऊपर डेल्टा, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू के जी सी माइनस वन एस माइनस वन, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे। अब हाँ एम नहीं है कुछ, ओके, तो एम देखो यहाँ पे ठीक है। अब करते हैं तो के जी, तो वन शुड बी इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा प्लस बीटा, ये भी तो है के जी, ये हो गया पहला इक्वेशन। सी माइनस वन शुड बी इक्वल टू अल्फा, ओके, सी अल्फा माइनस टू डेल्टा, ये हो गया सेकेंड, ओके। फिर एस पे माइनस वन है, तो माइनस वन इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस वन कर दो, ठीक है, और एस यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है। तो माइनस गामा माइनस टू डेल्टा, ये हो गया थर्ड, और मीटर, तो ज़ीरो इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर है, ये टू है, टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, ठीक है। ये हो गया चार इक्वेशन, चारों को सॉल्व करना होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस टू माइनस फोर, कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस टू शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा हो गया टू, ठीक है। टू गामा प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, गामा हो गया माइनस थ्री, ठीक है। इधर आ जाइए, माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू डेल्टा माइनस फोर, अल्फा हो गया थ्री, ठीक है। जब अल्फा थ्री हो गया तो वन इज इक्वल टू गामा अल्फा बीटा, अल्फा गामा इज माइनस थ्री प्लस डेल्टा इज टू प्लस बीटा, बीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो बीटा हो गया टू, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा टू माइनस थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू फोर। A physical quantity S is defined by S equals E cross B by mu naught. तो यहाँ पे लिख लेते हैं S equals E cross B by mu naught. Where E is electric field, B is magnetic field, mu naught is the permeability of free space, dimensions of S. तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q into E is electric field is force. So therefore electric field is force divided by Q, that is कूलम। मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बायर्ट-सेवर्ट लॉ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो बी बाय म्यू नॉट हो जाता है आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऑफकोर्स वन बाय फोर पाई भी होता है। तो डायमेंशन वाइज इसका हो जाएगा आई इज एम्पियर इंटू डी एल
meter, meter, meter cube. So therefore it is ampere per meter. Okay, so ampere is again coulomb per second. ठीक है, तो coulomb per second meter देख लीजिए, coulomb per meter second. Okay, so this is d by mu naught. So coulomb is gone, so this is F divided by ms. So now F तो S हो गया kg ms minus 2 Newton ms. M is gone, so this is kg s to the power minus 3. So this is S. Now we have to find out that this matches with what. So let us start one by one. Okay, so the first one, let us find out energy by charge into current. Okay, तो एनर्जी क्या होता है जूल. सो न्यूटन मीटर लिख लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट. चार्ज इज कूलम इनटू अगेन दिस इज करंट, सो ये दिस इज अगेन कूलम. कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज सेकेंड. तो देखिए ध्यान से, नीचे में कूलम स्क्वायर रह रहा है, तो ये नहीं हो सकता है. लेट अस प्रोसीड. सेकेंड वन, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टाइम. ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज मीटर इनटू टाइम विच इज सेकेंड. दिस इज मैचिंग विथ दिस, ये दोनों मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो B इज गोइंग टू बी करेक्ट, A इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. C, एनर्जी बाय वॉल्यूम. एनर्जी इज जूल, सो न्यूटन मीटर, सो kg ms minus 2 into m divided by meter cube. एक मीटर, 1 meter is remaining. Okay, so 1 meter is remaining, but ideally it should be kg per second cube. So therefore C is also not the answer. D, power by area. So power is F dot V. So F is kg ms minus 2 V ms minus 1 divided by area, which is meter square. Gone. So again this is kg s minus 3. So therefore D. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, A ना, सॉरी B and D is going to be the answer. Thank you. Sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one system, dimensions are given as follows. So position is meter, speed is meter per second, acceleration is meter per second square, linear momentum goes as kg meter per second, force kg ms minus 2. Then alpha plus p is equal to 2 beta. तो अल्फा वाला देखिए, तो मीटर है ना. तो बेसिकली इसको इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन 1 लिखें, इसको इक्वेशन 2 लिखें, 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ वन. तो अब क्या कीजिए, अल्फा प्लस पी. तो पहला इक्वेशन को और पी किस में है, थर्ड में, तो थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए करके, तो मीटर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है. सो विच इज एक्चुअली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड का ये स्क्वायर है. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट एक्स टू द पावर अल्फा इनटू एक्स टू द पावर बीटा, एक्स टू द पावर पी is equal to x to the power beta का whole square. So therefore alpha plus p is equal to 2 beta. So ये सही है पहला. ठीक है, हर एक के लिए इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा. दूसरा वाला p plus q minus r equals beta. p is like 3 p plus q, 3 into 4 and it's going to be divided by 5. कीजिए ms minus 2 into kg ms minus 1 divided by kg ms minus 2. This is gone, ये इधर से इधर चला गया, तो मीटर पर सेकेंड बचा, विच इज एक्चुअली सो वी कैन राइट एक्स टू द पावर p plus q minus r is equal to x to the power beta. So therefore p plus q minus r equals beta. That's what's true. Third one,
P minus Q plus R is equal to alpha. So therefore 3 divided by 4 into 5 kg. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into kg meter per second square divided by kg meter per second. Kg is gone, meter is gone, this goes up, so this is minus 1. This becomes ms minus 3, which is not equal to meter. तो ये गलत है, अल्फा नहीं हो रहा है. p plus q plus r equals beta. p प्लस क्यू प्लस आर, ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि बीटा में मीटर पर सेकेंड है, मीटर है, ठीक है, लेकिन क्यू प्लस आर में केजी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता. ओके, सो देयरफॉर ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस. थैंक यू. Let us consider a system of units in which mass and angular momentum are dimensionless. Okay. And if length has the dimension of L, which of the following statements correct? तो mass देखिए, mass क्या है, kg. So this is dimensionless. And angular momentum is I omega. अब I omega क्या होता है, m r square into omega, which is radian per second. तो this is kg meter square per second. अब ये भी dimensionless है, तो kg तो dimensionless है ही, तो kg हटा दीजिए. Now this is dimensionless, so therefore meter square per second, if it is dimensionless, so therefore second का जो dimension होगा वो meter square के बराबर होगा. So therefore second और time has a dimension of meter square, यानी कि length का square. This is the dimension of S. Okay. Now द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है, तो पावर ए ऑप्शन देखते हैं हम लोग. तो पावर क्या होगा, पावर इज एफ डॉट वी. सो देयरफॉर के जी एम एस माइनस टू इंटू एम एस माइनस वन. तो ये तो डायमेंशनलेस है, इसको हटा दीजिए, ठीक है. सो दिस गोज एज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. सेकेंड का क्या होता है, एल स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर दिस इज मीटर स्क्वायर by meter to the power 6. So this goes as L to the power minus 4. ये minus 5 दिया है, इसीलिए ये गलत है. B, डायमेंशन ऑफ फोर्स. फोर्स क्या है, kg ms minus 2. So kg is anyway dimensionless, so therefore this goes as meter per second square. So meter का हो गया L, सेकेंड इज एल स्क्वायर, सो देयरफॉर एल टू द पावर 4. तो इसका हो जाएगा एल टू द पावर माइनस 3. सो देयरफॉर इट्स करेक्ट, बी. सी ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड. के जी इज वन, मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकेंड इज एक्चुअली मीटर स्क्वायर, so this is gone, so this is like, you know, so this is L to the power minus 1, so therefore this is also correct. And then D, the dimension of energy. Energy is joule, so therefore Newton meter, ठीक है. तो kg ms minus 2 into m, ये kg dimensionless है, तो हो गया ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. सेकेंड का जो है तो मीटर का हो गया एल स्क्वायर, सेकेंड इज एल टू द पावर 4, सो देयरफॉर दिस इज एल टू द पावर माइनस 2 का डायमेंशन है. सो देयरफॉर बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. थैंक यू. In electromagnetic theory, the electric and magnetic phenomena are related to each other. Therefore, the dimension of electric and magnetic quantities must also be related to each other. In the questions below, E and B stands for the dimensions of electric and magnetic field respectively, while epsilon naught and mu naught stand for the dimensions of the permittivity and the permeability of the free space. L&D for length and time. So now the relationship between E and B is, okay, तो अगर ध्यान से देखा जाए E क्यू ई इज इक्वल टू एफ, तो E इज F बाई Q. क्यू वी क्रॉस B is equal to force. So force by Q into velocity becomes B. So therefore we can write
B is equal to E by V. So therefore E equals B into V. V is velocity meter per second. So therefore B into L t to the power minus 1. So therefore C is the answer. Thank you. Okay, the relationship between mu naught and epsilon naught. So 1 by root over mu naught epsilon naught is the speed of light, which is c, which is meter per second. So therefore mu naught epsilon naught is 1 by meter square per second square. So therefore mu naught becomes epsilon to the power epsilon naught 1 minus 1 meter L square and L minus 2 and T square, because it will be going up. So therefore D is the answer. Thank you. Consider an expanding sphere of instantaneous radius r. Okay, so this is a sphere and the radius is r, whose total mass remains constant. So mass of a sphere is volume into density. So therefore this is 4 by 3 pi r cube into rho. Since this is constant, so therefore we can write r cube into rho is actually constant, which is actually 3m by 4 pi, which is constant. Okay, fine. The expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. Therefore the rate of fractional change in density, now it is mentioned rate of fractional change of density 1 by rho d rho by dt is constant. So rho is k by r cube, as we saw here. So therefore we can write d rho by dt is going to be k into minus 3 r to the power minus 3 minus 1, which becomes minus 3k r to the power minus 4, and also dr upon dt. Okay, so this is what? This is d rho by dt. So therefore 1 by rho into d rho by dt is constant. So this we can write here, 1 by rho is r cube by k into d rho by dt is minus 3k into r to the power 4 into dr by dt. K is gone. This is so this is again a constant c. So therefore dr by dt is minus c by 3 into r. So therefore, because this is constant, so therefore dr by dt we are getting something like this. So therefore now it is mentioned the velocity v of any point on the surface of the expanding sphere is proportional to. So now since it is expanding, so r is changing, so therefore dr by dt is itself the velocity. So this is very clearly it is proportional to r. So therefore C is the answer. Thank you. A length that is scale L, that is the length है तो ये मीटर होगा. Depends on the permittivity of a dielectric material, Boltzmann constant Kb, absolute temperature T, number of unit per unit volume, that is n, of certain charge particles and charge q is true. Okay, तो सबसे पहले देखिए है ना, एक एक करके निकालते हैं हम लोग. तो इसका निकालते हैं रूट एन क्यू स्क्वायर. तो एन जो है वो क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1 बाई मीटर क्यूब. क्यू तो हो गया कूलम. एप्सिलन, तो एप्सिलन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए परमिटिविटी है, ठीक है. तो परमिटिविटी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर. एप्सिलन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी जिसका डायमेंशनलेस रहता है, और एप्सिलन नॉट का जो डायमेंशन रहेगा वही एप्सिलन का भी डायमेंशन रहेगा. तो एप्सिलन का डायमेंशन हो गया, ध्यान से देखिए
क्यू स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, अभी ऐसे इसको रहने देते हैं, क्यू स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, तो के बी लाइक एनर्जी कितना रहता है, लाइक द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम divided by 2 into kT. This is the energy per molecule. Okay, so the energy जो है जूल में रहता है, so K, this Boltzmann constant is actually joule per Kelvin. तो K into T, this is Kelvin. ध्यान से देखिए हर जगह K into T ही है ना. Anyway, joule per Kelvin is KB. Absolute temperature T is Kelvin and the charge is okay. चलिए अब इसका एक एक करके निकालते हैं. तो ये इसका n इज 1 बाय मीटर क्यूब, क्यू स्क्वायर इंटू 1 बाय एप्सिलन, एप्सिलन इज क्यू स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड के बी इंटू टी इज जूल, सो विच इज न्यूटन मीटर. दिस इज गॉन, न्यूटन से न्यूटन चला गया, दिस इज ये, और ये भी चला गया स्क्वायर. सो दिस इज 1 बाय मीटर स्क्वायर, और क्योंकि ये रूट के अंदर है तो दिस इज 1 बाय मीटर. ठीक है, इस साइड मीटर है और इस साइड 1 बाय मीटर, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा क्योंकि ये 1 बाय मीटर था, मीटर सारा कुछ था. सो दिस इज गोइंग टू बी मीटर, सो देयरफॉर बी इज करेक्ट. सी में आ जाइए, क्यू स्क्वायर, तो लिखिए क्यू स्क्वायर, एप्सिलन इज क्यू स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, n टू द पावर 2/3. n क्या था, पर मीटर क्यूब था, तो ये हो जाएगा 1 बाय मीटर स्क्वायर. ओके, के बी इंटू टी इज अगेन जूल, तो न्यूटन मीटर. गॉन, दिस इज मीटर क्यूब का रूट, सो m टू द पावर 1.5, ये गलत हो गया. हाँ, लेकिन n 1/3 है, तो देखिए ध्यान से, ये जो मीटर स्क्वायर था ये अब मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, मीटर रहेगा, तो इसीलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा. सो देयरफॉर बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस. थैंक यू. In terms of potential difference, that is V, electric current, permeability and the speed of light, the dimensionally correct equations are. तो पोटेंशियल डिफरेंस V, तो क्या होता है, क्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो इसीलिए V इज W, दैट इज वर्क डन बाय Q, विच इज न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय Q. इलेक्ट्रिक करंट I is Q by seconds. Permittivity epsilon naught. So we have this formula, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 into q2 by r square. So here, from here we can get epsilon naught is equal to q square by Newton meter square. Permeability mu naught qvb is equal to F. So qv into mu naught into I by 2a should be equal to Newton. So therefore mu naught becomes Newton meter divided by Q into meter per second into Q by second, which is equal to Newton second square divided by Q square, and speed of light is meter per second. So therefore now what we'll do is we will see all these equations. A, mu naught I square, mu naught क्या है, ns square by q square into I square, that is q square by s square, should be equal to epsilon naught. Epsilon naught is q square by Newton meter square into v square. V is Newton square meter square divided by q square. तो इधर न्यूटन रह गया और यहाँ पे भी here also न्यूटन is there. So therefore A is the correct option. Let us go for B.
B, there is epsilon naught I. Epsilon naught is again q square by Newton meter square into I, that is q by s, should be equal to mu naught into V, n s square by q square into V. V is Newton meter by q. Clearly we can see here this is q cube and the denominator here it's in the numerator, so it is not equal. Call C. I, that is coulomb per second, is equal to epsilon naught q square Newton meter square into C, that is meter per second, into V. V is Newton meter per coulomb. This is gone, this is gone, Newton is gone, meter square is gone, so therefore this is coulomb per second. So LHS RHS is same. C is the correct option. Go for D. Mu naught Ci equals epsilon naught V. Mu naught ns square by q square into meter per second into I, that is q by s, should be equal to epsilon naught V q square by Newton meter square into V Newton meter per coulomb. So here you can see that q is in the denominator, but here q is in the numerator, so therefore D option will also not be correct. So therefore the correct options are A option and C option. Thank you. Planck's constant h, speed of light c, gravitational constant g are used to form a unit of length L and unit of mass m. The correct options are, तो h क्या रहता है, जूल सेकेंड, which is Newton meter into second, which is kg ms minus 2 into m into s. So therefore this becomes kg m square s minus 1. C is meter per second. Gravitational constants G is Newton meter square per kg square, which is equal to kg ms minus 2 into meter square divided by kg square. Gone. This is kg minus 1 meter cube s minus 2. So therefore the correct options are, तो L को पहले चलिए L कर लेते हैं. A, तो L which is actually meter is equal to kg meter square per second to the power A into meter per second to the power B into kg meter cube s to the power minus 2 C. So therefore this becomes kg के ऊपर a minus c, मीटर के ऊपर 2a plus b plus 3c, and s is minus a minus b minus 2c. Okay, so now let us equate it with meter. So therefore a minus c becomes 0, first equation. 2a plus b plus 3c becomes 1, and a plus b plus 2c becomes 0. Third equation, let us solve. So here a is equal to c, we can get. So therefore 2a plus b plus 3a is equal to 1. So therefore 5a plus b is equal to 1. Here a plus b plus 2a is equal to 0. That means b is equal to minus 3a. Okay, so 5a minus 3a is equal to 1. So therefore 2a is equal to 1, a is equal to half. So therefore a is equal to half, c is equal to half, and b is minus 3 by 2. So therefore it becomes h to the power half, c to the power minus 3 by 2, and g to the power half. This is L.
So L is proportional to root H, L is proportional to root G. That's okay. Done. Now for M, we have to do the same thing for kg now. Okay. So like A minus C will be equal to 1. That is first equation. Then we have 2A plus B plus 3C becomes 0, and A plus B plus 2C, this also becomes 0. Okay, so therefore like if we subtract, so therefore it becomes A plus C becomes 0, so therefore A is equal to minus C. So A equal to minus C, so therefore minus 2C equals 1, C equals minus half. Then A equals half, and for B we have to calculate, so 1 plus B minus 3 by 2 is equal to 0, so therefore B minus half is equal to 0, so therefore B is half. So therefore its M is H root C root G minus half. Okay, so therefore M is proportional to root C, which is correct. M is proportional, no, this is wrong, this is proportional to 1 by root G. Okay, so therefore A, C and D are the correct options. Thank you. To find the distance D over which a signal can be seen in clearly foggy conditions, a railway engineer uses dimensional analysis and assumes the distance depends upon mass density rho, intensity, that is power by area, S of the light signal, and frequency is F. You find, okay. So density, okay. So D should be equal to rho to the power A, intensity S to the power B, and frequency to the power C. Okay, so now this distance is going to be in meter. Rho, it's kg per meter cube, so therefore kg m to the power minus 3 to the power A. Okay, S is power by area, so power is F into V by area meter square, so therefore this is Newton meter per second divided by meter square. Gone. This is kg ms minus 2 into s minus 1 divided by m, so it's kg per second cube, this is s. Okay, and frequency is 1 by, so therefore we can write m is equal to kg m to the power minus 3 A into kg s to the power minus 3 B into frequency, which is s to the power minus 1 C. So therefore kg A plus B, m minus 3A, s minus 3B minus C, this is m is like this. So therefore we can clearly see that minus 3A is equal to 1. So therefore A is equal to minus 1 by 3. So the engineer finds that D is proportional to S to the power 1 by N. Okay, so now if you see S to the power B, so D is proportional to S to the power 1 by, okay, we have calculated A. So now since A plus B for kg, A plus B is going to be 0, so therefore A becomes 1 by 3. So D becomes, A plus B equal to 0, so B becomes 1 by 3. So D is proportional to S to the power 1 by 3, so therefore N value is 3. We need not calculate C because
like we already have found out n. Therefore, thank you. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Boltzmann constant. तो energy जो था that is like degrees of freedom divided by 2 into kT. So therefore kT is equal to joule. So therefore Boltzmann constant का हो गया joule per temperature, which is Kelvin. So therefore the dimension is going to be is equal to Newton meter divided by Kelvin, kg ms minus 2 m by Kelvin. So therefore this becomes kg m square s minus 2 and Kelvin minus 1. So therefore this is mass L square T minus 2 and Kelvin minus 1. So this matches with S. So AS, AS and AS. Okay. Now for coefficient of viscosity, F is equal to neta A dV by dy. So therefore let neta find करना है, तो neta is equal to F into dy is actually in meters divided by A dV. A is meter square area, dV meter per second. So this is gone. So kg m s minus 2 divided by m square s minus 1. This goes as s minus 1 and this goes as m minus 1. So therefore this is mass to the power 1, T to the power minus 1 and L to the power minus 1. Okay, so this goes with Q. Okay, so we can see that all, there is only one option which is matching for A and B. So therefore D is the correct answer, but still we will solve the entire question. Planck's constant, it's joule second. So therefore Newton meter second kg m s minus 2 into m into s. So therefore kg m square s to the power minus 1. So mass 1, length square, t to the power minus 1, p. Okay, as you can see, C matches with P. And then the thermal conductivity. Okay, oh, I'm sorry, why I matched thermal conductivity with this one, Q. B is going to match with Q, not the thermal conductivity. Okay, fine. Now thermal conductivity. For thermal conductivity, it's going to be yes. So dq by dt is equal to ka into delta t by delta x. So therefore k is going to be dq. Q is heat, so joule divided by time second into delta x meter. A is cross section area meter square into temperature, that is Kelvin. So therefore this becomes J is again Newton meter into meter divided by S meter square Kelvin. It's gone. So therefore kg ms minus 2 divided by S. Okay, so therefore we can write mass to the power 1, L to the power 1, T to the power minus 3 and K to the power minus 1. So therefore this is R. Okay, so therefore D is the correct option. Thank you. Dense collection of equal number of electrons and positive ions called neutral plasma. Okay, they are free electrons coming, and let n be the number density of free electrons. तो n जो है number density है, तो कितना number, any number divided by per meter cube. तो अगर n का डायमेंशन देखा जाए तो है ये m to the power minus 3, L to the power minus 3. Anyway, okay, then going ahead, natural angular frequency is omega p. Omega p is radian per second,
रेडियन डजेंट हैव डायमेंशन, सो देयरफॉर इसका डायमेंशन हो गया s to the power -1. ओके, टाइम वेरिंग डिफरेंस, ठीक है. और ये एज ओमेगा अप्रोचेज ओमेगा पे. ओके, टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ई तो कूलम होता है ना, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी. तो एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड ओमेगा पी. ओमेगा पी का हम लोग ओमेगा पी इज दी है ना, ओमेगा पी का फॉर्मूला ये चारों में से कोई है. तो बेसिकली डायमेंशन सेम होना चाहिए तभी तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये कूलम स्क्वायर लिया हुआ है. तो इसका मतलब कि है ना, और तो इसका मतलब कि ये कूलम स्क्वायर को हटाने के लिए ई स्क्वायर ही होगा कहीं पे. तो हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे एन ई स्क्वायर दोनों में, ये तो होगा नहीं. ठीक है, कूलम स्क्वायर इसमें रह जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों एक ऑप्शन है, तो एन ई स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं. ओके, या फिर ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं. तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. देयरफॉर दिस इज kg ms -2 into m square which is kg meter cube s to the power -2. ओके, अब अगर ये kg है ना, तो अगर हम मास दे देंगे तो kg चला जाएगा. तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m एप्सिलॉन नॉट, तो हमको दिख गया kg चला गया. और अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब भी चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो है दिस विल बिकम s to the power -2. ठीक है, तो देयरफॉर c शुड बी द आंसर. ठीक है, d नहीं होगा. ठीक है, तो है ना, तो रूट एन ई स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, रूट ओवर s to the power -2 विच इज s to the power -1, जो कि ओमेगा p होगा. ओके, सो देयरफॉर द आंसर इज c. थैंक यू. Some physical quantities are given in column 1 and some possible SI units in which these quantities may be expressed are given in column 2. Match the physical quantity 1 with 2. Okay. तो कॉलम 1 में है ना, तो एक एक क्वांटिटी का हम लोग देखते हैं. GMEMS, तो F क्या होता है, G M1 M2 बाय R स्क्वायर. तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू R स्क्वायर. ठीक है, दिस इज बेसिकली तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, तो क्या हो गया, kg ms -2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज kg मीटर क्यूब s to the power -2. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं. ठीक है, दिस इज kg मीटर क्यूब s to the power -2. ओके, नेक्स्ट 3RT by m. RT PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, तो जो है RT प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. तो ये हो गया RT डिवाइडेड बाय m, मोलर मास इज इन kg. So this is kg ms -2 into m divided by kg. कौन तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ f बाय क्यू बी. ठीक है, ये था a, ये था b, c पे आता है f बाय क्यू बी. तो f क्या होता है, क्यू वी बी होता है, क्यू वी क्रॉस बी. तो बेसिकली ये v हो गया और इसका स्क्वायर कर दिया ये लोगों ने. तो दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये भी क्या है भैया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड देन देर इज GME बाय RE.
there is D, which is GME by RE. okay, तो GM1 M2 GM1 तो GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स, तो GME बाय RE हो जाएगा क्या, फोर्स इनटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी। ठीक है, तो FM बाय केजी क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर बाय केजी। सो दिस इज केजी MS-2 इंटू M डिवाइडेड बाय केजी, कौन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डी भी आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आ जाइए P, इस तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, P में, ठीक है, तो P क्या है, वोल्ट कूलम मीटर, वोल्ट कूलम मीटर। ओके, वोल्ट, QV इज एक्चुअली जूल, तो जूल मीटर, सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो kg MS-2 इंटू मीटर स्क्वायर विच इज kg m³ s टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया kg m³ s टू द पावर -2, और ये तो है ही, ये भी है। अच्छा, इसमें आ जाइए फराड, एस में, फराड इंटू वोल्ट स्क्वायर पर केजी। ओके, तो एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, तो ये ऊपर में क्या हो गया, एनर्जी हो गया, दैट इज जूल। ओके, जूल पर केजी, सो बेसिकली दिस इज न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय केजी, तो kg MS-2 इंटू M, सो दिस इज अगेन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट अस राइट डाउन द आंसर्स। सो A मैचेस टू P, Q, ठीक है, ये दोनों सेम है। B मैचेस टू R, S, C also to R, S, and D also to R, S, and that's the answer. Thank you. Okay, angular momentum is I omega, तो M R स्क्वायर ओमेगा, तो क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर ओमेगा, so this is M L स्क्वायर and omega is t to the power -1. Okay, latent heat, तो Q is equal to ml, तो Q by M, तो this is joule by M, mass, so kg MS-2 Newton meter divided by kg, so this becomes m squared, so this is L square t to the power -2. Torque is Newton meter, so this is kg MS-2 into m, this is mass t square, mass L square t to the power -2. कैपेसिटेंस के लिए we have half CV square, okay, should be equal to energy, ठीक है, या फिर हाँ एप्सिलॉन नॉट A by D, दिस इज कैपेसिटेंस, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, कौन सो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन, kg MS-2 into m, so this is q square kg m square s-2, so this becomes
mass to the power minus 1, L to the power minus 2, T square and Q square. Okay, so capacitance is M to the power minus 1, L to the power minus 2, T square and Q square. Inductance, half Li square, तो Li square is equal to energy, joule, Newton meter. So therefore L हो जाएगा kg ms minus 2 into m divided by I square. I is q by t, so q square by t square, so s square. So s, this is gone, so this becomes mass L square q to the power minus 2, mass L square q to the power minus 2. Resistivity, okay, resistivity is rho L by A. Okay, fine. So we have Q into V is equal to joule, V is equal to IR. Okay, so coulomb into I is coulomb by second, R rho L by A, meter by meter square should be equal to joule, Newton meter, kg ms minus 2 into m. So therefore rho becomes, so meter चला गया, rho becomes kg m cube s to the power minus 1 q to the power minus 2. So that is m L cube t to the power minus 1 q to the power minus 2. M L cube t to the power minus 1 q to the power minus 2. Okay, so now let us match. So angular moment ml square t minus 1, so this goes here. Okay, latent heat, this is here. Torque m L square t minus 2, torque goes here. Capacitance here. Inductance this. Resistivity is this. That's it. Thank you.